हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2025 ने अपडेटेड रिटर्न के लिए जो टाइम लिमिट बढ़ाई है उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं और किस तरह से वो एप्लीकेबल होगी। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एन अपडेटेड रिटर्न, विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डील्स विद अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। A taxpayer can file the revised return up to 31st December of the relevant assessment year. However, at present, if the taxpayer wants to disclose additional income, then he can file an updated return up to 24 months from the end of the relevant assessment year on payment of additional income tax. This is provided by facility of filing updated return as per section 139(8)(a) of the Income Tax Act 1961. What are the rates for additional income tax and also timelines for filing updated return prior to Finance Bill 2025? An additional income tax of 25% of aggregate of tax and the interest on the additional income disclosed in the updated return is to be paid for updated return filed after the last date of filing revised ITR, and such updated return is to be filed up to 12 months from the end of relevant assessment year. For updated return filed after the expiry of 12 months from the end of assessment year and up to 24 months from the end of relevant assessment year, the said additional income tax liability is calculated at the rate of 50% of the aggregate tax and interest on additional income disclosed in the updated ITR. व्हाट आर द अमेंडेड टाइमलाइंस, क्या टाइमलाइंस अमेंड किए हैं? तो इन्होंने पहले जो 24 महीने होता था इसको बढ़ा करके कर दिया अपडेटेड रिटर्न के नाउ बी फाइल्ड अप टू 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। व्हाट इज द एडिशनल इनकम टैक्स to be paid for filing updated return after the expiry of 24 months from the end of relevant assessment year up to 36 months? तो क्या है? 60% ऑफ एग्रीगेट टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल ऑन एडिशनल इनकम डिस्क्लोज्ड इन द अपडेटेड ITR। तो 24 से 36 महीने के बीच में 60%, यानी कि अब क्या क्या स्लैब बन गए? 25% 12 महीने में, 50% 24 महीने में, 60% 36 महीनों में, और 70% 48 महीनों में। तो व्हाट इज ना एडिशनल इनकम टैक्स दैट इज टू बी पेड फॉर फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 36 मंथ्स अप टू 48 मंथ्स? तो कहते हैं 70% ऑफ एग्रीगेट टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल ऑन एडिशनल इनकम डिस्क्लोज्ड इन द अपडेटेड ITR। What is the rationale behind, what is the rationale for updated return up to 48 months? तो क्या रैशनल दिया है, रीजन क्या दिया है? दिस इज इन लाइन विद द फिलोसफी ऑफ ट्रस्ट फर्स्ट। द फैसिलिटी ऑफ अपडेटेड रिटर्न अप टू 48 मंथ विल एनहांस वॉलेंटरी कंप्लायंस। तो यानी कि सरकार आपके ऊपर ट्रस्ट कर रही है और आपको कह रही है कि आप वॉलेंटरली अपनी यहाँ पर इनकम डिस्क्लोज करिए। Can a taxpayer file more than one ITR, updated ITR? No, taxpayer cannot file more than one updated ITR for one relevant assessment year. However, one updated return for every assessment year can be filed. Can a taxpayer file updated return after filing revised ITR? Yes. A taxpayer can file revised. A taxpayer after filing revised return can file updated return. He can file updated return for a previous year at any time within 48 months from the end of relevant assessment year as per Finance Bill 2025 amendment. Can a non-filer tax file updated return? If yes, what will be his additional income tax liability? तो कहते हैं yes, a non-filer can file updated ITR at any time for the previous year within 48 months. So 48 months में कर सकता है। और क्या क्या होगा? पहले साल में 25%, दूसरे साल में 50%, तीसरे साल में 60%, तो चौथे साल में 70%। ये देखिए, 25% ऑफ एग्रीगेट टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल, 50% ऑफ एग्रीगेट टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 60% ऑफ एग्रीगेट टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल, फोर्थ ईयर में 70% ऑफ एग्रीगेट टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल। Why was there a need to extend the updated ITR from current 24 months to up 48 months फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर? तो सबसे पहली फिलोसफी सरकार की वही है कि भाई हम आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। इट इज एक्सटेंडेड दैट वॉलंटरी कंप्लाई इट इज इंटेंडेड दैट वॉलंटरी कंप्लाइंस इंक्रीज्ड एंड टैक्सपेयर शुड कम फॉरवर्ड विद ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ देयर इनकम एंड शुड यूटिलाइज द फैसिलिटी ऑफ फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न instead of going through the prolonged process of assessment and reassessment proceedings. This will also reduce litigation cost and time of taxpayers and income tax department. अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड? तो अपडेटेड रिटर्न फाइल कब कर सकते हैं? जब आप कोई एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी डिस्क्लोज करना चाहते हो, एडिशनल इनकम डिस्क्लोज करना चाहते हो। आप कहोगे मैं रिफंड लेना चाहता हूं, तो यू कैन नॉट फाइल अपडेटेड रिटर्न। वेयर द अपडेटेड रिटर्न इज अ रिटर्न ऑफ लॉस has the effect of decreasing tax liability determined on the basis of return furnished अंडर सेक्शन 139(1). वन क्या होती है? नॉर्मल। 139(4) बिलेटेड रिटर्न। 139(5) रिवाइज रिटर्न। रिटर्न इन रिफंड और इंक्रीज इन रिफंड ड्यू टू
रिजल्ट इन रिफंड और इंक्रीज इन रिफंड, तो रिफंड नहीं ले सकते आप अपडेटेड रिटर्न के बेसिस पर। इफ द सर्च हैज बीन इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 132, अगर आपके ऊपर सर्च इनिशिएट हो गई तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोविजो provides restriction on filing updated return in detail. Are there any additional requirement to file updated return after expiry of 24 months from the end of relevant assessment year up to 36 months from the end of relevant assessment year? अमेंडमेंट में क्या और भी कुछ है? नो, देर आर नो एडिशनल रिक्वायरमेंट, बस 60% ऑफ एग्रीगेट टैक्स एंड इंटरेस्ट आपको पे करना है और आप अपडेटेड रिटर्न 36 महीने में फाइल कर सकते हैं। In case of non-filer, what shall be the additional income? Any income over and above the maximum amount which is not chargeable to income tax shall be the additional income for the purpose of filing updated return by a non-filer। यानी कि अगर आप नॉन फाइलर हैं, आपने कोई रिटर्न फाइल ही नहीं करी और अब आप कहते हो कि मैं 2 लाख की रिटर्न फाइल कर देता हूं, तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं बनता है। तो आपको स्लैब से ऊपर, ये क्या कहते हैं, विच इज ओवर एंड अबव मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो उसे क्या बोलते हैं? स्लैब। स्लैब के ऊपर आप कोई भी टैक्स चार्ज, कोई भी इनकम डिस्क्लोज करेंगे तो फिर आप उसमें अलाउ हो जाएंगे अपडेटेड रिटर्न में। Can a taxpayer file updated return where any notice to show cause under section 148A has been issued in his case after 36 months from the end of relevant assessment year? तो कहते हैं no, updated return shall be furnished by any person where any notice to show cause under section 148A has been issued in his case after 36 months from the end of relevant assessment year। तो वो शो कॉज नोटिस आ गया है 148A का, यानी कि सर्च इनिशिएट हो गई है बेसिकली, तो वो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। However, where subsequently an order is passed under subsection 3 of section 48A determining that it is not a fit case to issue notice, updated return may be filed up to 48 months from the end of relevant assessment year। यानी कि ऑर्डर पास हो गया कि नहीं, 148 का केस नहीं बनता, तो फिर वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड 14 क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के फॉर्म में आंसर किए। हमने यहाँ पर कोशिश की है कि आपके सारे डाउट्स अपडेटेड रिटर्न के रिगार्डिंग जो अमेंडमेंट हुआ है फाइनेंस बिल 2025 से, वो सब दूर हो जाएं। आप हमारे चैनल @% को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि आप हमसे किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।